आप कुछ भी करो, दैट इज आंसर। ये पूरा राइट साइड वाला लेफ्ट साइड बदल करो बस। देन 9 11 ये 0 सॉरी 8 2 is 3 cube per second. So you minus 5 0.2 centimeter into 3 6 centimeter effective rainfall. How many of you not taken 6? How many of you taken 6.6? कौन ले रहे बाबू 6.6? कौन ले लिया? Who took that 6.6? 5 इंडेक्स निकाल के 6 लेके चलना पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर लेके चलना पड़ेगा। समझ आ गया? हमको पता है स्टूडेंट्स कहां गलत करेगा, स्टूडेंट्स कहां गलत करेगा हमको पता है। सुधांकुल 6 into 6 plus 5 41 मिल गया आंसर। खेल खत्म, खेल खत्म हो गया। खुश हो गया बाबू, खुश हो गया। So we can do this. Everyone can do this na, easy na? Everyone can do this na, easy for you. चलो टू आवर ड्यूरेशन स्टॉर्म काउंट विद यूनिफॉर्म एक्सेस रेनफॉल ऑफ 3 सेंटीमीटर। अभी तो डायरेक्टली इफेक्टिव रेनफॉल दिया बाबू, नो डाउट। इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ 3 सेंटीमीटर अकर्स ओवर वाटरशेड। सो गिवन इज 2 आवर डी 2 आवर। ऑर्डिनेट्स ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ, वेरी गुड सुधाकर, नाइस। ऑर्डिनेट्स ऑफ स्ट्रीम फ्लो हाइड्रोग्राफ, पता है स्ट्रीम फ्लो हाइड्रोग्राफ क्या होता है? स्ट्रीम फ्लो हाइड्रोग्राफ इज फ्लड हाइड्रोग्राफ। ऑर्डिनेट्स ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ आर गिवन, द टेबल गिवन दैट इज ऑर्डिनेट्स ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ। बेस फ्लो 10 meter cube per second, base flow 10 meter cube per second. P coordinate of 1 hour unit hydrographic required, P is equal to 1 hour. P coordinate of 1 hour unit hydrographic required. ओ इतना मुश्किल हो गया देखो डेटा। सो क्या करना पड़ेगा हम? व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट FH से DRH, DRH से UH, दिस इज 2 hour UH, UH से S, S से 1 hour UH, दिस many we can do ना, understand? How many we have to do? समझ आ गया? One question can give you answer. And Anwar came today. This is for 2 marks, not 10 marks. FH to DRH, DRH to UH, UH to S, S to 1 hour UH. So all this is given for 2 marks only. And this is given horizontally. Don't take horizontally, because if you see horizontally, you will confuse again. Delaying में मुश्किल होता है. Because we are habituated for vertical table. Vertical table is the best table when you are solving in the exam also. Okay. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 16, 34. This is a 2 hour FH. 10, 16, 34, 40, 34, 40, 31, 25, 16, 10. हो गया काम? 2 hour FH. अब तो 2 hour DRH मिलेगा बेस फ्लो सब्ट्रैक्ट करने के बाद। व्हाट इज बेस फ्लो? बेस फ्लो इज 10. सो 10 सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलेगा देखो 0, 6, 24, 30, 21, 15, 6, 0. खुश हो गया? खुश हो गया बाबू? आसान है, फटाफट हो जाएगा। देखो दे आर गिविंग वेरी इजी नाउ, इतना मुश्किल नहीं। एंड डायरेक्टली इफेक्टिव रेनफॉल 3 सेंटीमीटर वाला, डायरेक्टली इफेक्टिव रेनफॉल 3 सेंटीमीटर वाला 2 hour UH मिलेगा ना। 0, 6/3 2, 24/3 8, 30/3 10, 21/3 7, 15/3 5 means no need of calci also. समझ आ गया आपको? दिस इज गेट क्वेश्चन ओनली, बट क्वेश्चन इज लेंथी, दे आर नॉट मेकिंग यू टू यूज calci also. सिंपल ले रहा है वैल्यूज, सिंपल ले रहा है वैल्यूज। अब तो यस ऑर्डिनेट्स निकलना पड़ेगा यहां से। वी हैव टू डिटरमाइन यस एडिटिव्स फर्स्ट, यस एडिटिव्स, यस ऑर्डिनेट्स। सो दिस इज ए 2 hour UH। 0 कहां डालना पड़ेगा? 0 कहां डालना पड़ेगा? 2 पे। At 2 we have to put ना, at 2 we have to put ना 0, 0 2 8. So take 2 and 8 here, 12 15, 12 and 15 here, 17 17. हो गया काम। इधर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 17 भी आएगा, 17 भी आएगा। यस एडिटिव्स, यस ऑर्डिनेट्स। हो गया ना? यस एडिटिव्स, यस ऑर्डिनेट्स।
दिस इटसेल्फ इज एसए। अब तो एसबी लाना पड़ेगा, एसबी। पहले क्यों नहीं निकाले? पहले हमारे पास एफएच है ना, यूएच नहीं। ये निकलेगा यूएच से, यूनिट हाइड्रोग्राफ से, नॉट फ्रॉम फ्लड हाइड्रोग्राफ ना बेटा इमरान। समझ आ गया? दे कैन गेट फ्रॉम यूनिट हाइड्रोग्राफ, नॉट फ्रॉम फ्लड हाइड्रोग्राफ। यस, आफ्टर दिस वी कैन पुट 0 हियर, 0 हियर, 0 2 8 12 15 17। हो गया? हो गया? SA minus SB into D by T. SA minus SB into D by T. What is D by T? D by T is equal to 2. D by T is equal to 2. 0, 4, 12, 8, 6, 4, 0. ओमी बाबा चक्कर में क्या क्या कर दिया आप, पूरा का पूरा गलत कर दिया। आगे आंसर। What is the peak over here? What is the peak over here? 1 hour UH ordinates, these are 1 hour UH. 1 hour unit hydrograph ordinates are this. Answer is 12 meter cube per second. Answer is 12 meter cube per second. Peak flow ordinate for 1 hour unit hydrograph of watershed. किसी को डाउट है इनके बारे में? बोलो फटाफट। टू आवर UH is equal to 2 hour DRH by effective rainfall. Effective rainfall is given 3 centimeter. So 2 hour DRH by 3 centimeter. फिलहाल समझ आ गया? So but divided by 3 क्यों कर लिया? This is FH minus base flow. This is DRH minus ERF. समझ आ गया बाबू? So ये क्वेश्चन ना 2022 गेट exam in 2022 conducted February 11 or 12 they conducted, and in 2022 we conducted a question solving session for hydrology on February 7th. Same model, 2 hours से 1 hour model we have solved. In the next week that question came in gate paper. Question solving session hydrology, top 10 questions I have given. Same question, values only changing, model तो same रहता है, values only changing. So that will be done every year, don't worry Rahul. हाँ, हर एक साल रहेगा बेटा। हम दिसंबर या जनवरी में पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्विंग सेशन भी रहेगा हर एक साल। हाँ, दिस ईयर आल्सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्वेश्चन। हाँ देखो क्या बोल रहे हैं हमारा ओमी बाबा। चलो, दिस वन वी विल टॉक लेटर। यस करो हाइड्रोग्राफ इज द हाइड्रोग्राफ। यस करो हाइड्रोग्राफ इज द हाइड्रोग्राफ। बोलो फटाफट। वन सेंटीमीटर इंटेंसिटी रेन ऑफ इन्फिनिट ड्यूरेशन। नो डाउट ना? ये सॉल्व करो, बोलो फटाफट, आसान क्वेश्चन है। 270 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, व्हाट इज इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज? QEQ चाहिए बेटा। QEQ 2.778, एरिया 270 किलोमीटर स्क्वायर, यूनिट हाइड्रोग्राफ इज 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, 250 मीटर क्यूब पर सेकंड। Mean annual runoff is 2 meter cube per second from a catchment. Mean annual runoff is 2 meter cube per second from a catchment. Discharge. Area of catchment 10 kilometer square. What should be effective rainfall? So we have a simple formula. Depth is equal to volume upon area. Volume is discharge into time upon area. Discharge given 2 meter cube per second. What is the time? Annual बोल दिया ना, annual 365 days, 1 year. 1 year 365 days. Every day carry 86,400 seconds. One day how many seconds? 86,400 seconds divided by area 10 kilometer square, 10 into 10 power 6, and we need in centimeter. As you have to express the answer in centimeter, multiply with 100. 630 centimeter. बोलो बोलो सुधांकुल, क्या हो गया? दिस वन। आप कुछ भी करो, दैट इज आंसर। ये पूरा बेवकूफ क्वेश्चन है।
Next concept in hydrograph, instantaneous unit hydrograph. Instantaneous unit hydrograph we are talking. Oh, cubic is meter cube per second beta. Cubic is nothing but the same, meter cube per second. हाँ, थोड़ा सिंपैथी तो देना पड़ेगा मुक्कागार इनको, डिप्रेशन में चल रहे हैं ना, थोड़ा सिंपैथी तो देना पड़ेगा इनको. Complex storm is completed beta. Complex storm is completed. Complex storms, all three methods completed. We are moving on to instantaneous unit hydrograph. So what instantaneous unit hydrograph is representing? It is representing smallest rainfall duration at which maximum peak discharge will occur. Smallest rainfall duration at which maximum peak discharge will occur. हमने ऐसा बोल दिया ना, Q is inversely proportional to time. If you are going to take a lowest rainfall duration, ultimately आपका discharge ज्यादा होता है ना, आपका discharge जो ज्यादा होता है ना. So for example हम ऐसा बोल रहे देखो, this is a unit hydrograph. The same unit hydrograph for the same catchment if it is occurred for a less time base, peak बढ़ जाएगा, और less time base, peak तो बढ़ जाएगा, और less time base. Same catchment को बात कर रहे हैं, same catchment को बात कर रहे हैं. Understand? For the same catchment, if you are decreasing the time base, smallest time base, reduced base, what happened to peak? Peak तो increase हो गया ना, increase हो गया, इतना बड़ा increase हो गया peak तो. So reducing time of occurrence of runoff. What is meant by time base? Time base is the time of occurrence of direct runoff. Reducing time of occurrence of DRO increases Q peak. So for the smallest duration of time base, if you plot hydrograph, for that very lowest duration of time base, if you plot hydrograph, that is instantaneous unit hydrograph. That is said to be instantaneous unit hydrograph. समझ आ रहा है? चलो, a hydrograph produced by an, हाँ क्वेश्चन तो खत्म हो गया बाबू, क्वेश्चन तो खत्म हो गया. Inverse only we said, but I have written directly. I told inverse only, but I wrote directly. Sorry. Done, completed everyone. 1 minute guys, just give me a minute. Okay, chalo. A hydrograph produced by an infinitesimal. This word is very important here. What is meant by infinitesimal? Infinitesimal, smallest, shortest, smallest or shortest. Hydrograph produced by an infinitesimal, हाँ, infinitesimal duration of storm, infinitesimal duration of storm that occur over a catchment, uniformly, and produces a highest peak discharge for reduced time base. Is called as a IUH, instantaneous unit hydrograph, or Clark's concept. The scientist who proposed this is Clark. Australia cricketer nahi, Clark. He is a scientist, but he is from Australia only. The scientist from Australia, Michael Clark, Clark's concept. Completed writing. As duration of storm decreases, what happened? As the duration of storm decreases, what happened to rainfall intensity? Rainfall intensity increases. That affect rising limb and crest segment, obviously na?
rising limb and crest segment of hydrograph, that affect rising limb and crest segment of hydrograph. क्या हो गया अभी, क्या होता है? So therefore hydrograph is skewed. Hydrograph is skewed. Understand the skewed? This is called skewed. Skewing only, na? Hydrograph is skewed because of that reason. So for IUH, now for IUH, delta T will be shortest duration of rainfall. Shortest duration of rainfall. And we have and provided D our unit hydrograph with intensity of 1 centimeter per hour. What is the D our unit hydrograph with intensity of 1 centimeter per hour? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बाबा? D our unit hydrograph with 1 centimeter per hour unit intensity. That is S curve. ये S curve होता है ना? D our unit hydrograph with intensity of 1 centimeter per hour. चलो हमारे पास क्या होता है? अभी S curve होता है. We have the S hydrograph. Done. उपाध्याय गारू चपंडी. So we have S QS ordinates, time in hour. So QS पता है आपको, S से शेप करवाएगा. ये तो आपको पता है ना बेटा. You understand this ना? So now this is from 0th hour. This is a S curve from D over UH. So now S curve for so we need delta T over na? Delta T over UH we require. Delta T over UH we require. ये तो S है. SB कैसा आएगा? SB कैसा आएगा? Delayed by delta T. This should be delta T ना? We can delay by delta T. We can buy SB. हो जाएगा ना? This is SB. समझ आ रहा है? SB क्या होता है? Are you getting or not? SB. SA delayed by delta TRs. SA delayed by delta TRs is SB. SB. So दोनों का डिफरेंस SCA minus SB, दोनों का डिफरेंस SCA minus SB. Now UH ordinate क्या होता है? ये पिक्चर हो गया खत्म. पिक्चर खत्म हो गया आपको. Delta T over UH ordinate. Delta T over UH ordinate required. इधर समझ आ गया आपको? What is capital T? Capital T क्या होता है डायग्राम में? SA minus SB into D by T. SA minus D is 1 na? Why hour? 1 centimeter per hour. So we should take D is equal to 1 hour. We should take D is equal to 1 hour. And what is the T? T is delta TR. So SA minus SB into 1 by delta T. SA minus SB into 1 by delta T. SA minus SB by delta T. So now what is IU unit now? UH unit. Delta S by delta T. This is only na. Clear now? Clear now? What is IUH ordinate now? Yes. SA minus SB by TB minus TA. SA minus SB by TB minus TA. IUH ordinate delta S by delta T. Slope of S curve clear? Is it clear now? बोलो बेटा फटाफट. अब तो बताओ. Slope of S curve of 1 centimeter per hour. Delta S by delta T is the instantaneous unit hydrograph ordinate. Delta S by delta T is the instantaneous unit hydrograph ordinate. Slope of S curve of 1 centimeter per hour. में आता है. Wait.
चलो चलो, समझ आ गया? अभी अभी क्लियर हो गया बाबू, अभी क्लियर हो गया? हाँ सुनो बेटा, वी गॉट SA minus SB by delta T. SA minus SB by delta T. SA minus SB is a difference in S na, Imran garu. Difference in S value is delta S na. Difference in S ds by dt. Change in S ds by dt. Change in S by change in. So change in S by change in time. अरे अब तो क्लियर हो गया, चेक करो एक बार. Change in S by change in time is IUH ordinate. Change in S by change in time is IUH ordinate. ये कहाँ आता है? ये ऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा? ये S कर्व का स्लोप में मिलेगा हमको. कहाँ भी S कर्व का स्लोप से मिलेगा ना. ये तो स्लोप ऑफ S कर्व होता है. ऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा ये बाबू? SA minus SB by delta T, slope of S curve. This is only important for us. IUH ordinate is ds by dt. It will be obtained at the slope of S curve. Slope of S curve at 1 centimeter per hour can give us IUH ordinate. हाँ वो भी बोलेगा ना, S is QS only. S is nothing but QS only ना बाबू. That is only we are saying ना, ds by dt. ओके ओके, इधर से ले लो लिमिट डेल्टा T2 0, लिमिट डेल्टा T2 0. डिफरेंशिएशन करो, मिल जाएगा ना. डिफरेंशिएशन करने के बाद तो मिल जाएगा ना बेटा. सो दिस इज द वन एंड ओनली क्वेश्चन इन पूरा दुनिया में, नॉट ओनली गेट, पूरा वर्ल्ड में सिर्फ एक क्वेश्चन आ गया इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ. द ऑर्डिनेट ऑफ इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ द कैचमेंट एट टाइम t is. ऑर्डिनेट ऑफ इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ एट कैचमेंट टाइम t is. सी वाला कौन तब पर देना पड़ेगा सी वाला को. स्लोप ऑफ एस कर्व विद इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर. अभी तक लिख दिया हम. स्लोप ऑफ एस कर्व इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर. अभी तक स्टार मार्क लगा के लिख दिया हम. समझ आ रहा है? ऑर्डिनेट्स ऑफ IUH ऑफ कैचमेंट एट टाइम t, स्लोप ऑफ एस कर्व विद इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी 1 सेंटीमीटर पर आवर. सो यू नीड दिस वन. Filigar, you need this one. This one. So next we are talking about synthetic unit hydrograph. It was proposed by the scientist Snyder. Snyder's unit hydrograph. Synthetic unit hydrograph. Last concept. निपुण जी, जल में मत चलो, टेंशन में मत चलो. Last concept of unit hydrograph. Synthetic unit hydrograph or Snyder's unit hydrograph. So this is unit hydrograph derived by empirical equations. Unit hydrograph derived by empirical equation, not by practical or physical measurement. हम क्या बोल दिया अभी तक यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए? बारिश होने का टाइम पे सुधागारू स्ट्रीम का आउटलेट का बारे में चल जाएगा. डिस्चार्ज फिजिकली मेजर करेगा बारिश में. सो सुधागारू को कोल्ड कफ फीवर आएगा ना. बारिश में इतना बार चलने के बाद क्या होता है सुधागारू को? कोल्ड कफ फीवर होता है. सो इंस्टेड ऑफ इट यूज दिस एम्पिरिकल इक्वेशन. ये बोल रहे सुधागारू ऐसा बोल रहे हैं हमारा हाइड्रोलॉजिस्ट को क्यों फीवर आएगा? हमारा हाइड्रोलॉजिस्ट सेफ रूम में ऑफिस में बैठो, इक्वेशंस ले लो, एम्पिरिकल इक्वेशन लेके सॉल्व करो. दैट यूनिट हाइड्रोग्राफ डिराइव्ड बाय एम्पिरिकल इक्वेशन, नॉट कॉम्प्लेक्स वाला. ओनली यूनिट हाइड्रोग्राफ. लकी बेटा, only UH, not we are not at all talking about complex. Only unit hydrograph. So unit hydrograph derived by empirical equation, not by physical or practical measurements. Not by physical or practical measurement of discharge. Also unit hydrograph for ungauzed catchment. What is ungauzed catchment? Unit hydrograph for ungauzed catchment. अरे एक बार रिफ्रेश करो ना प्लीज. Yes, ungauzed catchment क्या होता है? Ungauzed catchment, no rain gas station, because we said no physical measurement ना. We said already no physical measurement. Physical measurement नहीं है. Physical measurement नहीं बोल दिया ना हम. Unit hydrograph for ungauzed catchment, no rain gas station and its measurement. Then कैसा करेंगे? Then UH ordinate से derived by. UH ordinate कैसा आएगा बाबू चपंडी? UH ordinate कैसा आएगा अभी? UH ordinate से derived by physical features of catchment and hydrograph. Derived by physical features of catchment and hydrograph. Catchment and hydrograph का physical feature से निकल जाएगा. Obviously empirical equation, using empirical equation. वो तो पहले भी बोल दिया ना. Using empirical equation, physical features of catchment and hydrograph. Unit hydrograph ordinates derived by physical features of catchment and hydrograph and using empirical equation. चलो क्लियर हो गया ये वाला? बहुत ज्यादा गंदा फार्मूला आएगा बेटा, नॉट कुछ
बहुत ज्यादा गंदा फार्मूला मिलेगा आपको। सो हमको ये होना चाहिए पहले टाइम टू पीक डिस्चार्ज, टाइम टू पीक डिस्चार्ज टीपी इज इक्वल टू एल इंटू एल सी होल पावर 0.3। एक काम करो ना, कोएफिशिएंट भी लिखना पड़ेगा 1 मिनट, ct इंटू एल इंटू एल सी होल पावर 0.3, ct इंटू एल इंटू एल सी होल पावर 0.3। सो दिस इज कैचमेंट, ये तो हमारा कैचमेंट है, ये तो हमारा कैचमेंट है। दिस इज आउटलेट, ये पूरा कैचमेंट। सो हियर टू हियर एंटायर लेंथ ऑफ कैचमेंट बोल जाएगा हम, वी कैन से दिस एंटायर लेंथ ऑफ कैचमेंट, वी कैन से दिस and from the midpoint of length till outlet we can say LC, length of main drain. Okay, we can take length of main drain, L is length of main drain in kilometer, LC distance between center of catchment to outlet, वो भी किलोमीटर में लेना पड़ेगा, you have to take that in kilometer, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको टीपी आवर में आएगा बेटा, दोनों ना, टी एल एंड एल सी और टेकिंग इन किलोमीटर। L and LC in kilometer, TP to be taken in hours, CT time related coefficient, TP मिल गया आपको, TP आने के बाद देखो बेटा, TP आने के बाद D ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल भी मेजर नहीं कर रहे, देखो इतना गंदा प्रोसेस, ये तो यू मस्ट नो अबाउट ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल ना, वो भी नहीं है। D ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल आल्सो डिराइव्ड TP अपॉन 5 पॉइंट, ये कैसा कांस्टेंट रहेगा, ये बात सुनो ध्यान से एक बार। लेंथ ऑफ मेन ड्रेन कैचमेंट फीचर थ्रू आउट 30 इयर्स ऑफ कैचमेंट कांस्टेंट, LC डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कैचमेंट आउटलेट, वो भी 30 इयर्स कांस्टेंट रहेगा। टाइम रिलेटेड कोएफिशिएंट CT कांस्टेंट वैल्यू, सो TP कभी भी कांस्टेंट होता है। देन ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इज टेकिंग द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ TP by 5.5, ये कैसा कांस्टेंट चलेगा, हर एक बार सेम रेनफॉल ड्यूरेशन मिलेगा क्या, बट स्टिल बाय द एम्पिरिकल इक्वेशन वी आर टेकिंग D is equal to TP by 5.5, they say depending upon your empirical equation you can change the value of CT, चेंज करो बोल रहा है, एक बार 1.257 ले लो, एक बार 1.2 ले लो, एक बार 1.36 ले लो, CT चेंज करो, D चेंज होता है, ऐसा बोल रहा है। सो D is equal to TP by 5.5। चलो कंप्लीटेड दिस वन, ये तो खत्म हो गया। चलो अभी तक क्या हो गया ओमी अंकुल, टाइम बेस इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ, बात कर रहे हैं टाइम बेस का बारे में, 3 plus TP by 8, टाइम बेस इज इक्वल टू 3 plus TP by 8 एज पर सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ। So we said this is our unit hydrograph वाला concept, unit hydrograph ड्रा किया, so this is unit hydrograph, so this is peak value ना, ये तो Q peak होता है, Q peak, and this is the point where 50% of peak discharge occurred, this is the point where 75% of peak discharge occurred, 75% of peak discharge, this width is W75, this is 50% of peak discharge, this width is W50। सुनो ध्यान से, this was taken as a Q peak, इनका 50% पीक डिस्चार्ज इधर आ गया, ये विड्थ होता है ना बेस विड्थ, ये विड्थ होता है ना बेस विड्थ, दैट विड्थ इज W50। 75% पीक डिस्चार्ज इधर आ गया, इनका विड्थ होता है W75। दिस इज अ टोटल बेस विड्थ TB, दिस इज अ टोटल बेस विड्थ TB। क्लियर हो गया, W इज सेइंग द विड्थ, W50 W75। सो पहले Q पीक को होना चाहिए Q पीक 2.778 CP into A by TP, बट हियर आवर सेम फार्मूला रियली 2.778 A by D फार्मूला आएगा ना, A by D फार्मूला, बट इंस्टेड ऑफ दैट एक कोएफिशिएंट लेके आ गया, इंस्टेड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल टाइम टू पीक डिस्चार्ज ले लिया, इन प्लेस ऑफ रेनफॉल ड्यूरेशन D टाइम टू पीक डिस्चार्ज ले लिया, एंड दे ब्रॉट ए कोएफिशिएंट कांस्टेंट CP, कोएफिशिएंट ऑफ पीक डिस्चार्ज, सो 2.778 into CP into A by TP। अब तो पूछ रहे हमारा क्वेश्चन में क्या पूछना पड़ेगा, व्हाट इज द W75, व्हाट इज द W50, W50 इज इक्वल टू व्हाट इज द W50, 5.87 into QP by A is area of catchment whole power minus 1.08, W50 5.87 into QP by A whole power minus 1.08, ये तो आसान है, W75 सिंपल, W50 upon 1.75, W50 upon 1.75। so it is about time ना, time base only base width, so ये आएगा आवर्स में, this is मीटर क्यूब पर सेकंड, ये तो आवर्स में आएगा, एरिया किलोमीटर स्क्वायर, TP आवर। सो आप क्या करेंगे, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू बाय हार्ट करो, रात लो, नहीं होगा छोड़ दो। अभी तक दुनिया में कभी भी एक क्वेश्चन भी नहीं आ गया इनके बारे में,
Till now in any exam there is no question, nothing given regarding this synthetic unit hydrograph के बारे में. आएगा भी नहीं. गुड हिमांशु, हम भी ये सोच रहे हैं आएगा भी नहीं. चलो कंप्लीटेड. सुधांकुल बोलो फटाफट. हाँ आप कुछ भी कर लो बेटा, हम क्या करेंगे, आप कुछ भी कर लो, हो जाएगा. यू डू एनीथिंग, इट विल बी पॉसिबल बाय यू. दिस वन लकी गर्ल, आपका नाम पे नहीं है ना बाबू. ओमी आपका नाम पे नहीं है. यू सच ए गर्ल हु इज हैविंग एसएचयू इन द नेम. शादी करो. limitations of unit hydrograph. Limitations of unit hydrograph. So unit hydrograph is applicable for rainfall only, not for snowfall. Only unit hydrograph concept valid. Unit hydrograph concept is valid only for rainfall. Snowfall को applicable नहीं होता है. Snowfall को applicable नहीं होता है. Unit hydrograph is applicable for catchment area less than 5,000 kilometers square only. Because getting uniform rain more than 5,000, getting 5,000 kilometers square uniform rain also difficult. Because it is applicable only for uniform rains, na? Unit hydrograph is applicable only for uniform intensity storms only. Uniform intensity storms only. So the most difficult task ये होता है ना बेटा. You have a 2,000 kilometer square area catchment river basin. Having a rainfall with the same intensity in the entire 2,000 kilometer square area, it will be the difficult task, na? बोलो बेटा. So this is the biggest area we are having. This much biggest area we are having 2,000 kilometer square. हर एक जगह में सेम 1 सेंटीमीटर पर आवर यूनिफॉर्म इंटेंसिटी स्टॉर्म ये पॉसिबल तो नहीं होता है. चलो UH is not applicable. UH is not applicable for catchments with storage facility. Catchment with storage facility को applicable नहीं होता है. Means pond, lake, रिजर्वायर इसको एप्लीकेबल नहीं होता है बोल रहे हैं, क्योंकि 100% बाहर नहीं आएगा ना. स्टोरेज करेगा, स्टोरेज करने के बाद भी बाहर आएगा. डोंट गिव एक्यूरेट वैल्यू. वी आर मेजरिंग एट द आउटलेट ऑफ कैचमेंट. आउटलेट ऑफ कैचमेंट में पूरा रन ऑफ बाहर आने के बाद हमको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा. पूरा रन ऑफ नहीं आ रहा है, कुछ स्टोरेज हो गया, कुछ भी बाहर आ रहा है, देन ये एक्यूरेट वैल्यू होता है क्या? समझ आ गया आपको? वी डिस्कस्ड दैट दिस इज द कैचमेंट. ऑलरेडी कैचमेंट में यहां तक पानी है. नाउ रेनफॉल इज कमिंग आउट. प्रेजेंट रेनफॉल एज रन ऑफ द एक्सेस फ्लो, सो दैट वी कैन से दिस इज एक्यूरेटली रन ऑफ. This is accurately run off. ऐसा नहीं हो कुछ तो कुछ पानी स्टोरेज हो गया, पानी यहां तक नहीं, पानी यहां है. Then that water first give for storage, ना? First it can give for storage. After that only it is going out. ये तो यूज नहीं है ना बेटा. So catchment with storage capacity, ponds, lake, reservoir, etc. को applicable नहीं होता है. So this is given for MSQ. MSQ question में आएगा, be careful. This kind of questions we can expect in MSQ. चलो हो गया, done. हाँ, this ends hydrograph. अब एक काम करेंगे, सुनो ध्यान से. थर्सडे एक टेस्ट लगा देंगे. थर्सडे ओनली वी कैन डू हाइड्रोग्राफ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साथ में. आई होप सो. दो एवरीवन कंप्लीटेड, बोथ टॉपिक्स एवरीवन कंप्लीटेड. आई होप सो. एवरीवन अटेंडिंग एनवायरमेंटल हाइड्रोलॉजी बोथ. एनवायरमेंटल हाइड्रोलॉजी बोथ नहीं है ना? एक काम करो, ठीक है, थर्सडे हाइड्रोग्राफ करेंगे. विल डू थर्सडे हाइड्रोग्राफ. फ्राइडे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. ओके, फ्राइडे नहीं, सैटरडे ले लेंगे. एक दिन प्रिपरेशन को टाइम दिएगा. सैटरडे करेंगे. सैटरडे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. हाँ, टाइम क्या होना चाहिए? 2 PM और 8 PM? यू डिसाइड. 2 PM और 8 PM. अगेन कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है. ठीक है, पोल करेंगे. बहुत अच्छा हो गया. नाइस टू सी दिस. चलो, आई विल डिसाइड एंड टेल यू देन. अभी तो मेरा डिसीजन में चलेगा. हाँ, सैटरडे तो जियोटेक भी स्टार्ट होगा. सैटरडे तो ये काम करो, सुनो. सैटरडे तो 11 AM करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. ओके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सैटरडे 11 AM हाइड्रोलॉजी क्लास नहीं है. 11 AM हाइड्रोलॉजी क्लास नहीं है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 11 AM को करेंगे सैटरडे. सो हाइड्रोग्राफ वी कैन गो विद 8 PM. थर्सडे 8 PM. कोई क्लास चल रहा है क्या? Any class is going on? Plus class is going on? No, na. 8 to 9 only 1 hour. 8 to 9 only 1 hour. टेस्ट में 15 क्वेश्चन रहेगा.
एप्टीट्यूड क्लास, आरपीएसआर क्लास एट 8:30। अरे आप तो आरपीएसआर क्लास खत्म कर लिया ना, फिलहाल आप क्यों बोल रहे हैं? आरपीएसआर क्लास गोइंग स्टूडेंट्स आर ओनली 3-4 स्टूडेंट, 3-4 स्टूडेंट्स। हाँ, नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा बेटा गौरव, नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा, ठीक है? ओके, वो हम डिसाइड करके बता दूंगा आपको, आई विल डिसाइड एंड टेल यू, डोंट वरी। बाय बाय, बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय, मिलेंगे। अच्छा गारू, सोल्यूशन मिल गया आपको? जीएस का बारे में सोल्यूशन मिल गया? अच्छा गारू, हाँ चलो खुश रहो। दोनों एक काम करो, आई विल टेल यू मैसेज व्हाट्सएप में बोलता। अच्छा जी, आई विल टेल यू मैसेज। बाय।